Assalamu alaikum students. आप में से बहुत सारे बच्चियों ने मेरी वाइफ की डेथ पे अफसोस किया। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सब जो दुआएं आपने की अल्लाह आपको कबूल करे और अल्लाह मरहूमा के दर्जात में इजाफा करे। Thank you. Now the second leg of the antimuscarinic drugs. We were talking about the pharmacokinetic. So the elimination of atropine occurs in two phases. It is bimodal. And the plasma half-life of the rapid phase is just 2 hours, while the plasma half-life of slow phase is 13 hours. 50% of the drug is excreted unchanged in urine, while 50% is excreted by hydrolysis and by conjugation in the liver. So bimodal elimination, 50% excreted unchanged and 50% metabolized in the liver by hydrolysis and conjugation. The effects of atropine is found less in body, but prolonged in eye, iris, and ciliary body, and may persist for more than 72 hours. So the effects of atropine are more pronounced in eye, in the iris, and in the ciliary body, and it is a prolonged effect. It may persist for more than 72 hours. And now this is a slide which I need your attention. The mechanism of the muscarinic receptors is when the agonist binds with the receptor, the cholinergic receptor binds, it prevents release of IP3 and inhibition of adenylyl cyclase, which are caused by the muscarinic agonist and atropine. Basically, inhibits both these mechanisms. It inhibits the release of IP3 and it also inhibits the formation of adenylyl cyclase, which are basically caused by the muscarinic agonist. Now, the second paragraph, I first read it and then I explain it to you. Atropine causes a reversible, brackets there, surmountable blockade of cholinergic actions on muscarinic receptors. That is, the blockade by atropine can be overcome by a larger concentration of acetylcholine or similar muscarinic agonists. ठीक जी, जरा गौर कीजिए इस बात को, ये बात जरा थोड़ी समझने वाली है. Atropine is basically a blocker of the muscarinic receptors. And this effect lasts for some time. Just I may, it is more than 72 hours. But the good thing is that this block is reversible. Reversible in the sense that if you apply higher concentration or larger concentration of acetylcholine or similar agonists, the effect of atropine is blocked. So you can surmount it. You can surmount the block by applying higher concentration of acetylcholine or similar drugs. The blocking effect of atropine is then reversed. It is lost. So that's why it is a reversible blockade. That's why it is a surmountable blockade or reversible blockade of atropine by higher doses of the muscarinic agonists. And then initially, again, please concentrate. I'll read the paragraph first and then I'll explain. It says, initially it was thought that muscarinic agonists are neutral compounds. It was thought that the muscarinic antagonists
are neutral compounds that occupy the muscarinic receptor and prevent agonist binding. It says it was thought that the muscarinic antagonists are neutral compounds. They simply occupy the receptor and block the action of the agonist and block the binding. But recent studies suggest that muscarinic receptors are continually active. Now they say that the muscarinic receptors are active all the time. And most of the antimuscarinic drugs act as inverse agonist. Most of the antimuscarinic drugs act as inverse agonist. They shift the equilibrium to the negative state of the muscarinic receptors, वो जो continuously active होती है जी initially, लेकिन जब एक muscarinic antagonist आ जाएगा, it will be acting as inverse agonist, और ये continuous activity वाली state है, उसको ये inactive state की तरफ ले जाएगा. And the drugs, the muscarinic antagonist that act as inverse agonist are atropine by itself, pyrazine, ipratropium, and glycopyrrolate. So atropine, pyrazine, ipratropium, glycopyrrolate are those muscarinic antagonists that act as inverse agonist. आपके माइंड में डेफिनेटली ये क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, ये इनवर्स एगोनिस्ट क्या चीज होते हैं. शायद आप में से कुछ स्टूडेंट्स को पता हो, कुछ बच्चों को पता हो, लेकिन let's see what is an inverse agonist. So in pharmacology, an inverse agonist is a drug that binds to the same receptor as an agonist. In pharmacology, the inverse agonist is a drug that binds to the same receptor as an agonist, but induces a pharmacological response opposite to that of the agonist. Important चीज देखिए जी, important चीज देखिए. It binds to the same receptors. The inverse agonist binds to the same receptors as the agonist binds. लेकिन होता क्या है? जब inverse agonist bind करेगा, it will induce a pharmacological response that is exactly opposite to the agonist. वो उसको bind करके agonist से opposite question काम कर देगा. While a neutral antagonist has no activity in the absence of the agonist, an inverse agonist but can block the activity of the either. Now, the G protein coupled receptors, they act as inverse agonist or opioid antagonist जो है जी. Drugs like naloxone and naltrexone are also partial inverse agonist at the mu. This is mu opioid receptors. Nearly all antihistamines acting as H1 and H2 receptors have been shown to be inverse agonists. So तीन चीजें आ गई जी. Number one, G protein coupled receptors. Number two, opioid antagonist. And number three, antihistamines. चाहे वो H1 पे एक्ट कर रहे हैं, चाहे H2 पे काम कर रहे हैं, they are all inverse agonists. ठीक है जी. This was it. So atropine basically and related compounds act as inverse agonists at the muscarinic receptors. Examples आपसे मैंने discuss कर ली. No. So now atropine is highly selective for muscarinic receptors. इसकी binding muscarinic receptors के ऊपर बहुत अच्छी है. And it effectively blocks the secretion of the salivary glands, secretion of the bronchial glands, and secretion of the sweat glands. Right? So the salivary, the formation of saliva, the secretions of the bronchi, and the secretion of sweat is effectively blocked by the action of the atropine. While on the nicotinic receptors, the action of atropine is weak. Muscarinic पे बहुत अच्छा, first class, perfect. But in nicotinic receptors, it is weak. And at non-muscarinic receptors, it is undetected. ठीक है जी. For muscarinic, बहुत अच्छा, nicotinic, weak, and non-muscarinic,
नो एक्शन, अनडिटेक्टेबल। ठीक है जी, कोई एक्शन नहीं है, इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि उसको डिस्क्राइब किया जाए। एंड एट्रोपिन इज नॉट सिलेक्टेड फॉर M1, M2 और M3 सब टाइप्स ऑफ द मस्कुलिन रिसेप्टर्स। ठीक है जी, ये तीनों रिसेप्टर्स के ऊपर कोई एक्ट नहीं कर रही होती, बट Parenzepine is selected for M2 and M3, while diphenhydramine is selected for M1 and M2 receptors. थोड़ा सा डिफरेंस आ गया जी सब मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर। केट्रोपिन M1, M2, M3 में से किसी भी सब टाइप पे एक्ट नहीं कर रही होती। पेरेंजेपिन M2, M3 पे कर रही है, डायरिफेनेसिन M1 और M2 पे कर रही है। और अगर आपको याद हो तो मैंने मस्कुलिनिक जब ड्रग्स में कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि 5 टाइप के मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स हैं। ये स्लाइड आप पहले देख चुके हैं जी। M1, M2, M3, M4, M5। M4, M5 यूजुअली इनसिग्निफिकेंट है, बेसिकली M1, M2 और M3 होते हैं जी। ठीक है जी, एट्रोपिन ना तो M1 पे एक्ट करती है, ना 2 पे, ना 3। बेंजीपीन M2, M3 पे कर रही होती है जी। ठीक है जी, वाइल डेरिफेनेसिन M1 और M2 पे कर रही। सो नाउ अब काम की बात आ जाए, ये तो मेन मैकेनिज्म्स और बाकी चीजें डिस्कस कर ली। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एट्रोपिन एंड द रिलेटेड ड्रग ऑन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स? व्हाट आर द इफेक्ट्स? ठीक है जी, जरा तो जो मेरी तरफ कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। In therapeutic doses, atropine has minimal stimulatory effect on brain. ठीक है जी, especially on the parasympathetic medullary center, and a slower but longer lasting sedative effect on the brain. है minimal stimulatory effect है जी। ठीक है जी, लेकिन बाद में जाके ये it has got a slower but longer lasting sedative effect on the brain, while scopolamine, it has got marked central effects. It has got marked central effects, and it produces drowsiness and amnesia in sensitive individuals. Drowsiness, of course, you know what is drowsiness. Amnesia is loss of memory. Amnesia is loss of memory, and it is in certain individual. हर सब पेशेंट्स में नहीं है, some sensitive individual इसमें की drowsiness और amnesia काज कर होती है, लेकिन it has got marked central effects. And in toxic doses, ये बात जो मैंने आपसे की, ये therapeutic doses में थी. Now the toxic doses, scopolamine largely, indutropine to lesser extent, can cause excitement, agitation, hallucination, and death. 4 चीजें जी. जब toxic doses होंगी, scopolamine largely, indutropine to a lesser extent. 4 things: excitement, agitation, hallucination, and death. So toxic doses, antimuscarinic, sometimes they can produce fatal, dangerous injury. Now, the centrally acting antimuscarinic drugs reduce tremors of Parkinsonism. पार्किंसन में एक डिजीज है, शॉर्टली मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, सभी नोट कर लीजिए कि जो सेंट्रली एक्टिंग एंटीमुस्कारिनिक ड्रग्स हैं उनका एक थेरेप्यूटिक रोल है पार्किंसनिज्म। And when you combine antimuscarinic drugs with levodopa, combination of atropine or some other antimuscarinic drug and levodopa produce better results than either drug alone. अगर आप कंबाइन अगर पेशेंट को पार्किंसनिज्म है, अगर आप कंबाइन कर दें एंटीमस्कारिनिक ड्रग को लीवोडोपा के साथ, इफेक्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जैसे कि आप एंटीमस्कारिनिक अलोन यूज कर लें या लीवोडोपा अलोन यूज कर लें। मोनोथेरेपी पे नहीं है, लेकिन जो आप पॉलीथेरेपी करेंगे, कंबाइन करेंगे, ड्रग इफेक्ट becomes more pronounced and patient compliance is better. Scopolamine is particularly effective in motion sickness. काफी सारी ड्रग्स हैं जी, जैसे बना लीजिए जो मोशन सिकनेस में यूज होती हैं, स्कोपोलामाइन इज ऑन द टॉप.
इट इज पार्टिकुलरली इफेक्टिव मोशन सिकनेस। ये वो सिकनेस है जब पेशेंट ट्रेवल कर रहे होते हैं, उन्हें वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, हेडेक शुरू हो जाता है। ठीक है जी, ये हम में से कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, कुछ लोग आप में से कुछ बच्चे बच्चे अभी भी उनको मोशन सिकनेस होती होगी। ठीक है जी, जब भी वो ट्रेवल करते हैं उन्हें वॉमिटिंग और दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो स्कोपोलामाइन इज अ पार्टिकुलरली गुड ड्रग फॉर मोशन सिकनेस। Now, Parkinsonism, it says it is any condition that causes a combination of the movement abnormalities seen in Parkinson's disease. Parkinson's disease में जो combination है movement abnormalities की, movement वो Parkinsonism है, such as tremor, such as slow movement, such as impaired speech, such as muscle stiffness. चार चीजें आपके सामने आ रही हैं जी, ट्रेमर, स्लो मूवमेंट, impaired speech and muscle stiffness, and it results from the loss of dopamine containing neurons in the brain. So whenever there's loss of deficiency of dopamine containing neurons in the brain, Parkinsonism or Parkinson's disease results. So look at this diagram. Parkinsonism, right से शुरू करते हैं top पे, it says the patient has got a mask-like face. इसे expressionless face भी कहते हैं. Then there are नीचे आ जाइए asymmetric resting tremors. Patient जब रेस्ट पे होता है, आराम से होता है, उसकी ट्रेमर्स हो रही होती है, हाथों में भी और पाँव में भी. These are called asymmetric resting. Symmetric नहीं है जी, राइट में ज्यादा हो, लेफ्ट में ज्यादा हो, कहीं पहुंचे हो, asymmetric. Then postural instability, as patient suffers from movement disorders, so it has got postural instability. अब देखिए ये पेशेंट थोड़ा आगे से झुका हुआ है, आपने नोट किया, स्ट्रेट नहीं खड़ा जी. And then she has got shuffling steps, shuffling gait जिसको कहते हैं, छोटे छोटे पाँव पे ये पेशेंट जी चलता है. और अगर आपको एक्सपीरियंस जब आप देख लेंगे, आप पेशेंट की चाल से पहचान लेंगे कि ये चाल जो शफलिंग गेट है ये पार्किंसंस की है. देन फ्रीजिंग, मसल स्टिफनेस, पेशेंट एक मूवमेंट इनिशिएट नहीं कर पा रहा, वो अपना हाथ उठा के प्याली पकड़ना चाह रहा है, लेकिन वो हाथ उठा के अपनी प्याली पकड़ने में उसको टाइम लग रहा है. दिस इज फ्रीजिंग. देन देयर इज मसल रिजिडिटी, देन दिस रिड्यूस्ड आर्म स्विंग, क्योंकि मूवमेंट डिसऑर्डर है. तो अभी जब आप बच्चे बच्चे चल रहे होते हैं, आप फ्रीक्वेंटली अपने हाथ राइट साइड लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ नहीं. एंड देन दी मूवमेंट्स आर स्लोड. एंड देन दी पार्किंसन गेट, शफलिंग गेट के साथ. एक और डायग्राम है जी, देख लीजिए. ऑन द लेफ्ट देयर इज अ ट्रायंगल जिसके अंदर लिखा है 3 कार्डिनल फीचर्स, 3 मेन फीचर्स. सबसे ऊपर hypokinesia means less movements, hypokinesia, then tremors, and then rigidity. So तीन चीजें मिलके जब चीजें इकट्ठी हो जाएंगी पेशेंट में, तो पार्किंसन में आ जाएगा hypokinesia, tremors and rigidity. इसके ऊपर देख लीजिए, it says that both hypokinetic and hyperkinetic features are present in Parkinson's disease. जरा फिर नोट कर लीजिए, it says both hypokinetic and hyperkinetic features are present in Parkinson. देखिए ऊपर hypokinesia आ गया ट्रायंगल के, rigidity, hyperkinetic and tremors. इस डायग्राम की तरफ आ जाइए. अगेन आप देख लीजिए, पेशेंट थोड़ा सा आगे को झुका हुआ है, ये स्ट्रेट नहीं खड़ा. सबसे टॉप पे लेफ्ट पे ट्रेमर्स, then he has got a mask-like face, flexed elbows and wrist, slight flexion, tremors, दोनों हाथ टांगे, then the short shuffling steps, hips and knee slightly flexed, rigidity, stooped posture. So ये ऐसी कंडीशन है जिसमें मूवमेंट abnormalities हैं,
लेकिन हाइपोकाइनेसिया भी होता है, हाइपरकाइनेसिया भी होता है। और मजे की बात यह है कि लीवोडोपा एक ड्रग है जो कि पार्किंसन के लिए यूज होती है, लेकिन अगर आप इसके साथ सेंट्रली एक्टिंग एंटी मस्किनिक ड्रग्स कंबाइन कर दें, पेशेंट का रिस्पांस बहुत अच्छा हो जाता है, पेशेंट की लाइफ ज़्यादा इजी हो जाती है। अब जैसे मैंने आपको बता दी, आप देख लीजिए, ये डायग्राम में ज़रा बेहतर है, दोनों डायग्राम बेहतर है, लेकिन देख लीजिए ये बिल्कुल जो जो चीज़ें लिखी हैं ये डिजीज़ के प्रिज्म के साइन एंड सिम्टम्स हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, फिर वापस दोबारा ऊपर चले जाइए, ये आपको आप एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिए, समझिए आपको साइन एंड सिम्टम पार्किंसनिज्म के आ गए। ठीक है जी। एंड देन दी क्लिनिकल फीचर्स, वही चीज़ है दोबारा इसलिए रिपीट हो रही है तो आपके माइंड में बैठ जाए, लेकिन ये चीज़ याद कर लीजिएगा, हाइपोकाइनेसिया एंड हाइपरकाइनेसिया बोथ को persist in the same patient, mask like face, tremors, a typical gait, ठीक है जी, एंड स्टूपिंग फॉरवर्ड, ये इस डिजीज के कार्डिनल सिम्टम हैं जी। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। अपना रिस्पांस जरूर भेजिए, सिंपली थैंक यू पे ना रुकिए, कुछ और कीजिए, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपकी ये चीज़ ज़्यादा बेहतर हो सके, आप इससे ज़्यादा बेनिफिट कर सके। थैंक यू। ठीक, अच्छा अच्छा, मीटिंग फॉलो